Okay, Sangamitra. So last time we have seen about how powerful this print statement, है ना? हाँ. So we can do many things in print, many heterogeneous or multiple values, separator, end Yeah. statement, all these things we have seen, right? Yes. So today we are going to see about tokens. What are tokens exactly? Okay. Okay. So tokens are nothing but like, for example, if I'm telling you like this at the rate, again this one, and if I'm saying this A B 7 8, do you understand anything here? What are these? We are not understanding, right? But I can't see your screen. Oh, I haven't shared my screen. Okay, I forgot actually. I thought I shared. Now I'm sharing. Now, now is it visible to all? To you? हाँ. It's visible. Yeah, bro. Yeah. So now, if I'm typing all this at the rate exclamation equal to 1 AB 7 8 something like this, this one, and also this. Do you understand anything? What is all this? Or These hmm? are the symbols that we use in the code. Yeah, these are what? Symbols are So in this there are so many. So for example, if I'm giving you like this, all of a sudden you will not be able to confine, like figure it out, right? So as you saw yesterday some of the symbols, so you are saying that, but in front of anyone, if I'm telling directly, they'll not able to understand this. So this, for example, this one and this one, I'm closing it with this angle brackets. uh, So we cannot able to understand, right, what exactly it is. yeah, strings बोलते हैं. ये बहुत सारे, it is a combination of many symbols, right? Yeah. Combination of many symbols. We now, to understand this, we need to understand like each and everything what they represent. Yeah. So in this, I'm adding also like, for example, int. I have float. I have all this. So it is just a mixture of all the symbols. Okay. Yeah. So now we don't understand like what exactly these are. So in order to categorize this all everything, what the Python have done here is we have tokens, or what we can say that tokens are units, lexical units, or smallest fraction. We can say that smallest Action. smallest fraction in what, in the Python program. Okay, so what it is the smallest fraction. What token is smallest fraction in the Python program, or else we can also say that the token is a set of. So it is a set of what, one or more characters. So all are basically a characters, right? Yeah. So what are those characters should have what meaning, Meaning. having a meaning together. So now, for example, having a meaning together, what is the meaning? What exactly this line means? This is very important. It is a set of one or more characters having a meaning together. Yeah. Now let's see example. Now if I'm writing here 1 plus 2, is it having any meaning? Addition. It is having a meaning. So it has what meaning for this. Now for example, if I'm writing this one plus this one, does it have any meaning? No. No meaning, right? Yeah. Yeah. In the same way, if I'm doing something uh, differently, like for example, if I'm writing L, this is L, and then I'm using at the rate exclamation, this, does this have any meaning? No. No meaning. No meaning. Yes, so that's the reason what it is saying is tokens. It means what? Tokens is a set of one or more characters are there, right? Here more characters, but Yeah. having what, having a meaning together. They should have some meaning. Okay.
Now Okay. let's see what are the types of tokens we have. There are five types of tokens. How many types? Five types of token. Five types of tokens. Let's see what are those and we'll implement those. Now first one is we have identifiers. Identifiers. So the name itself says what? Identifiers. Yeah, to identify, Five to identify what? To identify a token. variable or a class or a method or a function. We use a name. We do use a name. Like for example, in order to call you, I call you as Sangamitra. My name. Everyone having their own names, right? So Yeah. with the name, it is very much easier for us to do programming with the help of the name. Yes. Yes. So to identify a variable or a class, function, and so many other things, objects, we do use what? Name. Yes. Yeah. So that is called what? This is an identifier. Okay. Yes. Now we are going to see that is separate, like to in order to make two entities separately. Yeah. Let's see one example here. Now, if I'm taking a is equal to 10. Okay. So what is the name of Cal. 10? The Yeah. name is what? A. 10. A is the name. A is the name and 10 is a value. Mm. Okay. Okay. So the simply means here is 10 is a value and A is what? Name. Yeah, name, or we can say identifier. Identifier. Yeah. We also call it as variables Okay. for this. So what is this? Simply this line means the meaning of this line is a 10 is stored, or we can say assigned where? In A. So 10 is stored or assigned in A. Yeah. So in this A, what we do have? A के अंदर 10. क्या है? A के अंदर 10 है, हाँ. और वो 10 को अपन किस में स्टोर कर रहे हैं? A में स्टोर कर रहे हैं। तो A का 10 का मतलब नाम क्या है यहाँ पे? अपने Uh, वेरिएबल का नाम, और आइडेंटिफायर का नाम क्या है यहाँ? variable ये A इज अ name. नेम। सो A जैसा वैसा आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नाउ टू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट्स सी व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स, वन बाय वन देखेंगे। नाउ आई एम ओपनिंग माय आइडियली, हियर इट इज आइडियली। यस, ये तो यू नो राइट दिस हाउ टू एक्सेस। Yeah. या यस, नाउ let's see. Now a is equal to what I said, 10. Now I wanted to display this, right? So simply what I'm doing here, print a. If I'm printing what? A. Now after this I need to save the file. How I have to save? Some name, for example, a dot py. Py is the extension. Save. Now I need to run this code. I have to click on this run module, and I got 10. Yes. So to display anything we are using what? Print. So print of a. Okay. Now here, what are the names I can keep? Can I keep here any names? So those are the characteristics. Like what are the names I can keep here? That is very important. Like we can also say that it is the rules for the identifiers, characteristics or rules for identifiers. So what are the rules we have? Let's see. So we are currently talking about rules for identifiers. First rule is, can we start with a number? Can I a in the place of a, can I write like this 10?
10 के अंदर 10 स्टोर कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते ना, 10 तो एक वैल्यू है, एक वैल्यू के अंदर और एक वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं. Yes. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? उसका मतलब क्या है? फर्स्ट वन क्या है? वी कांट स्टोर a value inside inside a value. We can't store To a value inside inside another. a inside a value. एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकते. दैट इज हाँ. वन. It means what indirectly means we cannot give a name. Yeah. नंबर का नेम नहीं दे सकते हैं. ओके. नाउ नाउ स्टार्टिंग, the starting is number, right? Yes. Now you see that 10, if I'm writing here w, अभी अपन दे सकते हैं क्या नाम? See here, what I did is 10 के अंदर 10 स्टोर कर रहे हैं एंड प्रिंट में 10 लिख रहा हूँ. So see here, what is the error I'm going to get is, it is saying, what it is saying, can you read this? Cannot assign it. Lit- Literally here. Maybe you meant. Yeah, so it is giving me error, syntax error. See this above, it is a syntax error. So एक वैल्यू के अंदर एक वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं. Now for example, if I'm writing here some alphabets, like if I'm using B here, तो ये 10 को इसमें स्टोर कर सकते हैं क्या आप? What do you say? I think no. इसको इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं क्या? चेक करते हैं. मतलब 10 और B, एंड it is giving what? Invalid Invalid. decimal literal. So what we can say that we can't, the name should not start with number. अब यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रहा ना नाम, Yes. सो नंबर से स्टार्ट नहीं होना है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल. So we cannot start with a number. Now can my number be after this alphabet? Like I'm writing 10 here. अभी यहाँ पर ये वाला 10 हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसके बाद में. So now let's see whether in the place of 10 I'm giving something 100. अभी होगा, काम करेगा? Yes, No. now it is working. So what is the meaning of this? So first one can be named, but after the name, anything can be entered, like value. Yes, yes. So it means, what is the meaning here is, third point. Uh, third point is the number can be used After the name, after name, identifier. after yes, after character, after alphabets. Yes. Yes. अल्फाबेट के बाद में नंबर रखे तो इट कैन टेक. नाउ Yeah. फोर्थ पॉइंट देखते हैं. हाँ, सो नाउ ये तो हो गया. अभी इसमें डन, इसको भी हटा दे रहा हूँ. नाउ कैन आई कीप हियर लाइक दिस, मैं ए स्पेस बी, और यहाँ पर भी ए स्पेस बी कर दिया. कैन आई, विल इट वर्क? हाँ. Workout सो tablet. लेट्स सी व्हाट इज. नहीं, वर्क नहीं हो रहा, इनवैलिड है. It should not consist of space. Yes. So Yes. the variable should not have More space than. in between. बीच में स्पेस नहीं रहना है Yeah. ना. अगर स्पेस नहीं है, नाउ नाउ इट विल रन. देखो 100 आ गया. हाँ. तो अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं कहाँ स्पेस यहाँ पे दे रहा हूँ. अभी आई एम नॉट यूजिंग दिस, आई एम जस्ट गिविंग ओनली स्पेस. यहाँ पर भी एक स्पेस दे दिया, यहाँ पर भी एक स्पेस, हियर आल्सो वन स्पेस आई गिवन. So now when I'm executing this, what I'm getting, unexpected indent. So it is talking that it is not a good start. So I cannot start with a space also. Fifth point is Cannot have space. space can't be a name, a variable name or identifier name. Okay. 6 point.
Now, can I use some special characters such as exclamation? Can I? Let's see what it Mm, is giving me. It is giving me again invalid syntax. So what is the meaning of this is we cannot use special characters. But let's see underscore. Can we use underscore here? no. Yes. Underscore we can use like 550. See here once again 100.5 I got right. Yeah. So what is the meaning of this? The meaning here is we can use underscore except except underscore 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 we can't use other other special characters symbols. Okay, now can we also see here dollar symbol? Only underscore worked. Why not other symbols, bro? They have kept like that, like Acha. at the time of creating the program they programmed in such a way that underscore like now this is also one of the reason I will tell you that अभी ये देखो ये भी काम नहीं कर रहा है तो ओनली अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम बहुत बड़ा है इफ आई एम गिविंग सम बिग नेम लाइक हाई स्पेस no I'm giving this as this is what salary for example. So this is what salary of one employee. So Okay. that employee name I'm writing here. So Dinesh, Dinesh salary. So this will not work, right? If I'm writing here because I have space here. So in the space, I can use what underscore. So to join this, Acha. so to join this, they have allowed this. So now let's see. Did I got Yeah. 1 lakh? Yes, this is a salary. So now you understood, right? So Yeah. it can be started with at any point it can be like in the starting, ending. We can use what underscore. Now one Underscore. more seventh one. Now can we use other characters in between? Like for example here at the rate, here also at the rate. What it is saying? Cannot. So Cannot. even yeah, even it means what the special characters cannot be used in between also. Understood? Yeah. Yeah, that is what one thing. And let's see, can we use make use of keywords? एक कीवर्ड है ये फर बोल के. Can I make use of this fur? And here let me change some name here. I'm writing 23 4. What it is giving me? Valid syntax. Yeah, so it means what? Keywords. Keywords are not allowed to To be a use it. name as a name. Yeah. Name of the variable or name of the identifier. We cannot use keywords. So yesterday you have seen right so many keywords. Once you press that keyword in the ideally, Yes. yeah, you can visit once again if you want. So it is not. Yeah, we cannot store anything in this keywords because they are predefined already. They know what is their work is. So we cannot keep a keywords as a identifier. Now, for example, can I keep print? No. Print is equal to, and also I'm using what print. Print is also one of the keyword, right? Yeah. Like inbuilt. So what it is saying, int object is not Traceable. callable. Yeah. So we are not able to do this. Yes. So what is the meaning here? Keywords are not allowed to be, Using. yeah, keywords are not allowed as Use in the name. name for identifier. Identifier. Now, eighth one. This is done. Now, how much big name I can keep? For example, I'm keeping Q like this. Can I keep so much big name? Like for example, A. Yes.
Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Okay, so So something like very big I'm giving all this. ठीक है, इतना बड़ा नाम रखना हो. के लिए हम Yes. अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं इतना बड़ा नाम के लिए. हाँ, अंडरस्कोर कब यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल दिनेश का सैलरी था ना, तो दिनेश और सैलरी, लाइक फॉर एग्जांपल माई हाउस. सो जब अपन को स्पेस लगाना है ना, तो उसके प्लेस में अपन अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. या माई हाउस, house servant, or house old things like this. But here I'm not using anywhere space or any underscore, right? So I'm just using what इतना बड़ा है, फिर भी can will it work? It is working, right? So इसका मतलब क्या है कि you can give as big as you can. Variable, the name is unlimited. The नेम name of the variable can be unlimited. बहुत बड़ा नाम दे सकते हैं अपन. हाँ. ओके, तो ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. यू कैन, whenever you are having time, you can start working on this. Okay, variables का. Yes. हाँ. Yeah. So now once we are done with this, this is about what? Identifiers. Yes. Now what is the next one? What is the next one? We have, Identity values. yeah, we have tokens, right? In the tokens we have types. What are those types? Did I have written the types? No. भूल गया भाई. नहीं नहीं, टाइप्स में आइडेंटिफायर्स डायरेक्ट लिख दिया. हाँ. तो पहला आइडेंटिफायर है, पहला मतलब टोकन है आइडेंटिफायर. ये फर्स्ट वन है. सेकंड वन इज कीवर्ड्स. थर्ड वन is literals, and fourth one is operators, and now fifth one is what? Punctuators. ये पूरे हैं. इसके बारे में अपन ब्रीफली पढ़ेंगे अभी इस सेशन में. सो इसके इसमें आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ लिए. यस. या. Yes, now we are left with the keywords, literals, operators, and punctuators. Sometimes, like keywords, in these keywords, we also have data types also. In somewhere, they will write what data types. Yes. So you can also take that also. Sixth one, data types. Data types. In some books, they prefer. So you can call them as like six types हैं अपने को here. What is the meaning of what is the second one? Keywords. Yeah. What is the meaning of keywords? Mm, These these are reserved in a computer. कंप्यूटर लैंग्वेज में ये keywords are स्पेसिफिक reserved. दैट हैज अ मीनिंग. Yeah. या इसको दैट these are reserved words in a compiler language that has specific meaning. Specific meaning. Okay. Okay. Yeah. So now, for example, we have how many keywords we have seen on that day? Mostly like it is 33 keywords in Python. Yeah, 33 keywords hai. Now, what are those keywords are? Let's see one example I'm giving. And hai, not hai, तो or मुझे डाउट आया उस huh? दिन में 2 दिन के बाद. In my second class, I have seen keywords and types. All those things are right. Now we are speaking about them.
I have shown you on the ideally, right? हाँ Yesterday it was yesterday I shown you about yesterday I shown you in the ideally how to execute it. हाँ हाँ Yeah. So this is what the tokens little yeah. example. So just and or and while all these are what keywords. So keywords का simple meaning क्या है? Reserved word है. They are what reserved. They have something. Like for example, and है, while है, for है. So these things you will be coming to know in future further classes. So we are done with the keywords and identifiers. What next? Next operators. Oh नहीं, next और एक है ना literals. हाँ literals. Yes. So what is the meaning of literals? Let's see. Yeah, this is third one, no? हाँ हाँ Literals. So literals का मतलब क्या है ना कि it is a constant value. What it is? constant value. Yeah, these are literals. Literal. ये क्या है ना? ये भी है tokens in Python are data elements. एक है मैं डेटा एलिमेंट. आपके साथ एक फोटो शेयर किया, वो सब कीवर्ड्स होते हैं यू शेड वन पिक का. या व्हाट्सएप में. हाँ परफेक्ट. यस, हाँ ये पूरा कीवर्ड्स है. करेक्ट. सही है. उसको काउंट करो कितना है. वो 33 है और मोर देन हाँ दैट. मोर देन दैट. वन हाँ, टू थ्री एज पर फोर 3.7 वर्जन इट इज. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 36. हाँ 3 इंक्रीज्ड में भी अभी 36 है. ओके. हाँ आर यू श्योर? या ओके. 36. देन मे बी यूअर्स इज इन विच वर्जन? यूअर्स लैपटॉप वर्जन का नाम बता दो उसके ऊपर. विंडोज 11. नहीं नहीं, वो तो विंडो का है ना. जैसे देखो अच्छा फॉर एग्जाम्पल पाइथन का थ्री ये देखो पॉइंट यहाँ पे 3.10.1 है ना, तो थ्री ये पॉइंट देखो ट्वेल्व पॉइंट टू 3. 12.2. हाँ. सो एज पर दिस वर्जन, ये वाला वर्जन के हिसाब से 36 कीवर्ड्स बता रहा. हाँ ओके. नाइस. सो या लेट्स सी अबाउट लिटरल्स. लिटरल्स क्या है कि टोकन्स इन पाइथन आर डेटा एलिमेंट्स विद व्हाट, विद अ फिक्स्ड वैल्यू. तो क्या है इसका जो वैल्यू है ना फिक्स्ड है. फिक्स्ड मतलब क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट. फिक्स्ड. उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. ओके. हाँ सो नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव, अपने को ना बहुत सारे हैं लाइक स्ट्रिंग लिटरल है. एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल स्ट्रिंग लिटरल. उसके बाद क्या है? बुलियन लिटरल्स है, न्यूमेरिक लिटरल्स. सो इसका मतलब मेन मतलब क्या है समझा रहा हूँ. द एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल 10, मैं 10 लिखा. 10 क्या है? एक वैल्यू है ना, फिक्स्ड वैल्यू है इसका. ए 10 है, 10 फिक्स्ड है, राइट? हाँ अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स, एक्स क्या है? एक्स इज नॉट फिक्स्ड. एक्स के अंदर अपन इज इक्वल टू 10 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं. यस. हाँ सो एक्स इज नॉट फिक्स्ड बट 10 इज फिक्स्ड. या ऐसा एग्जाम्पल है. सो स्ट्रिंग्स का भी ऐसा ही है कि इफ आई एम गिविंग name that will be same. So ऐसे ही we also have one boolean literals as हाँ. These are what? These all are about what? Literals. So collection literal भी रहता है अपने पास. Literal अच्छा. collections collection literals. इसमें क्या लिस्ट आता, सेट आता, टपल. सो इसमें अपने को आता लिस्ट, सेट,
डबल वो सब अपन देखेंगे बाद में, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। ओके, ओके। तो अभी अपन अपन अभी कहाँ कहाँ तक पढ़ लिए पूरा, मतलब कौन कौन सा हो गया टोकन्स? फिक्स्ड। फोर्थ वन है ना? हाँ। सो फोर्थ वन क्या था? ऑपरेटर्स। ऑपरेट। तो ऑपरेटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर? लाइक ऑपरेशन इज इक्वल टू, ऑपरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ऑपरैंड प्लस ऑपरेटर। यस, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग ए प्लस बी, तो इसमें ऑपरैंड क्या है? ये ऑपरेंड ए और बी ऑपरैंड है, ऑपरेटर क्या है? सिंबल प्लस। प्लस सिंबल है। नाउ इन द सेम वे इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, if I'm writing like this, a minus b plus into a divided by, मतलब डिवीजन कर रहा हूँ, अगेन b, इसमें कितने हैं? डिवाइडेड बाय, we can, I'm just saying here c, here it is d. Now you tell me how many operands I have? फोर। Hmm? What are फोर those? ऑपरेंड्स, ए बी सी a, डी। c comma d. And how many operators? Hmm? डिवीजन का सिंबल हाँ, कितने टोटल? तीन। तीन है, इंटू इंटू का है और एक डिवीजन का है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। सो अपने अपने पाइथन में, इन पाइथन देर आर 7 ऑपरेटर्स। कितने हैं? 7 ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, सेकेंड वन इज रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड वन इज लॉजिकल, फोर्थ वन बिटवाइज, एंड फिफ्थ वन इज असाइनमेंट assignment operator, sixth one is membership, and seventh one is identity identity operator. So we'll learn all this. As of now, just remember the names of these operators. कौन कौन से हैं? First one is अर्थमेटिक, hmm, रिलेशनल, hmm, लॉजिकल, yeah, बिटवाइज, असाइनमेंट, hmm, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। yeah. So in this you just need to remember कौन कौन से operators हैं, like arithmetic में है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, अगेन फ्लोर डिवीजन है, again it has exponential 1 2 3 4 5 6, और एक है परसेंटाइल। ये क्या है? मॉड ऑपरेटर। सो पूरे कितने हैं इसमें टोटल? 7 है ना? 7। हाँ, तो प्लस ये 1 2 3 4 5 6 7, पूरा 7 है। अब रिलेशन ऑपरेटर्स में देखो, देखते हैं रिलेशन में भी, देखो कितने हैं। लाइक यहाँ पे है ग्रेटर देन, उसके बाद है लेस देन, उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू है, उसके बाद डबल इक्वल टू है, एंड देन वी हैव नॉट इक्वल टू। ओके, सो टोटल हाउ मेनी दिस? 1 2 3 4 5 6। 6, टोटल 6 है। एंड लेट्स सी अबाउट लॉजिकल। लॉजिकल में कितने कौन से ऑपरेटर्स हैं? लॉजिकल में है एंड, और उसके बाद नॉट, एंड है और है। इसका मतलब क्या है? जब अपन ऑपरेटर्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जब, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट रिमेंबर द सिंबल्स, व्हाट एग्जैक्टली दे आर कंसिस्ट ऑफ, एंड the meaning and all everything practically we'll do later on. Now bitwise, in bitwise we have bitwise and, again bitwise or, again bitwise XOR, again we have
complement, or we can say sometimes negation also. And then this is left shift, this is right shift, it is pointing towards right direction. And can you tell me what is how many total operators it has? 6. One, two, three, four, five, six. Yes, six only, right? हाँ. एक दो तीन चार पाँच छः. Yes, it is six. Now coming to this assignment operator already we seen like equal to. अभी इसके पहले बोला था ना कि a is equal to 10. तो हाँ. a assign कर रहा है किसमें? 10 is assigned in a. ये. How? Because of this equal to. So equal to एक ही है, but we have compound assignment, shorthand बोलते हैं उसको. So this is only one. Membership मतलब if it is like something which is a part of that, it is a part of it or not. Like for example mother में yamo है कि नहीं? Mo. In the mother we have mo also, right? Like some part Yeah. is existing or not. Like in, इसको है in, the name of the operator is in and not in. And we also have identity, मतलब it is going to check whether both are belongs to same reference or a same class or not. So here we have is, and then we have is not. So these are the total. इसको कितना? One. This is one, and this is 3. not in एक ही है. 2. ये टू है और ये 2. ये भी टू है. ओके. एंड ये लॉजिकल वाला थ्री है. और 3. So ये symbols now, I guess if you are seeing all these symbols now, you are in a position to you understand, right? या. So is not, ये सब क्या है? Identity है. In not in जो है membership. Equal to, असाइनमेंट. या and और ये सारी चीजें क्या है? Bitwise. Yes. So these are the operators concept. Yes. Now what we are pending with one. Fifth one, what we said? Punctuators. Yeah. ये वाले why do we are using this? So let's see. These tokens in Python employ to what? To put the grammar and structure of syntax into practice. It is grammar and structure, or we can say, yeah, structure of what? Syntax टेक्स्ट. into practice. Okay. So we use this kind of these are the symbols to make use of correct grammar, correct structure we are writing. Like for example, if I'm writing print, here if I'm not, if I'm giving only one and I'm writing like this, will it be giving me any error or not? एरर या एरर. क्यों error आ रहा? हम एक ही सिंटेक्स रखा है ना यह. Correct. So we have to give two. So ये क्या है पता? This is giving us a structure, like grammar बोल सकते हैं ना. Like in English we have grammar, structure, rules and regulations. हाँ. So let's see few other examples. अपने पास क्या क्या स्ट्रक्चर सिंबल्स हैं? लाइक वी डू हैव कामा के बारे में यूज करें ना अपन कल प्रिंट स्टेटमेंट में. यस. We have comma, again hash also. Hash, you know what is hash? Hash मतलब comment line. I said yesterday, I told comment मतलब single line comment होता है hash से. And also we have seen backward slash. Why this backward slash? Yes, to have a new line. For example, if I wanted to use a new line, in that case I can use this backslash. And how about this? ये दोनों मेथड्स में या फंक्शंस में यूज करते हैं ना इसको. प्रिंट के अंदर भी ये दोनों रहता, उसके अंदर लिखते हैं अपन कुछ भी.
again in हेलो the same. भाई। हाँ हेलो. अच्छा, बीच में डिस्टर्ब आया आपका। आवाज नहीं आ रहा? नहीं नहीं, अभी आ रहा है। 2 मिनट के वॉइस कट हुआ। वो अच्छा अच्छा. हैश बोल रहा है ना उस समय में। अच्छा अच्छा, हैश आपको पता है ना? हाँ हैश मतलब कमेंट लाइन के लिए यूज करते हैं अपन. और हाँ। ये बैक स्लैश एन अपन यूज करें लाइक नया सीक्वेंस, न्यू लाइन के लिए. सो दिस इज फॉर बैक, या बैक स्पेस वी कैन से दैट. और दिस इज व्हाट फॉर एनी लाइक प्रिंट है ना, प्रिंट के बाद में यूज करते हैं ना अपन ऐसा प्रिंट. हाँ। वी यूज लाइक दिस. ओके. फॉर ओके। फंक्शन और फॉर मेथड्स. एंड ये वाला है, ये सेट्स में यूज करते हैं. दिस इज फॉर लिस्ट. यस. And we also have something called at the rate also. In the oops concept we learn this. So ये पूरे क्या है, स्पेशल सिंबल्स हैं. ओके. पंक्चुएटर्स बोलते हैं इन लोगों को. या. एक्चुएटर्स। यस यस. So now this, now what is left? We are left with our data types. डेटा। Sixth one. hmm, data टाइप। data types. So what is the meaning of data type? Data type का मतलब क्या है? This simply means, it simply means what? The type or a category or of the data. Yes. या। If I'm saying int मतलब क्या है? न्यूमरिक नंबर्स. नंबर्स. अगर मैं फ्लोट बोल रहा हूँ, फ्लोट मतलब क्या है? ये नंबर्स. नंबर्स मतलब एग्जाम्पल जो है 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस. या। एंड फ्लोट मतलब 5 4। नहीं नहीं, 5.4 डेसिमल्स का. हाँ। 10.789 ऐसे पॉइंट्स आ जाता है ना, उसको फ्लोट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग. str. str का मतलब क्या है? स्ट्रिंग्स. लाइक नेम. वी कैन से दैट गुड इवनिंग. अगर कुछ भी लिखना है, कुछ नेम्स और एनीथिंग इन द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, वी कैन राइट दैट इज या। string. And yeah, and we have something like list. List क्या है? कलेक्शंस कॉन्सेप्ट है पूरा. या। तो ऐसे यूज करते हैं इसको. एंड दिस इज टपल. टपल में कैसे यूज करते हैं? लाइक दिस राउंड फिगर. एंड दिस इज सेट. सेट हाउ वी डू यूज सेट. ये टपल मतलब फॉर एग्जांपल वन है, वन कामा. सो दिस इज सेट. सेट इज हाउ वी डू यूज this like this curly braces. And we have dictionary. Dictionary we do use like this, and it has keys and values. ओके। Keys and वैल्यू। values. Value pair. So इसमें pairs रहते हैं. की वैल्यू पेयर. ओके। ओके. या। तो ये पूरा जो है ना डेटा टाइप्स है. डेटा टाइप्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस इज जस्ट अ introduction about all this. So we have learned about tokens in today's class. Yeah. या। And one more thing I would like to teach you is type, about type function. So let's see what is this type function. Type मतलब वो कौन सा क्लास में है? Type is one function. This talks about which category. It talks about which category the data belongs to. The data item belong to. Now for example, अभी देखो I'm writing one code here. A is equal to 1 2 3. Yes. B is equal to Vivek Pandey. Okay. Now C is equal to 123.998. Okay. And D is equal to, ये जो है लिस्ट है, 1 2 1 2 3 4. Okay. ओके। A B C D E. E is equal to
करली ब्रेसेस में मैं 1, 3, 5 दिया, यफ यफ इज इक्वल टू, इसमें 1, 2, 3 दिया, एंड ABCDEF। अब जी में अपन क्या दे रहे हैं, ये वाला दे रहे हैं, डिक्शनरी। सो डिक्शनरी मीन्स व्हाट, वन for example your name I'm writing Sangamitra, is it correct? GH. Okay, Sanghamitra, that's it. GHA. H. Sanghamitra, MITH. Sanghamitra, TH, huh? Okay, no, it's correct. Yeah. Okay, for example now here I'm writing my name, Vivek Pandey, Vivek Vivek Pandey. Okay, now here it is what, it is in the form of a dictionary. This is dictionary. And what else we are left with, this is a numbers, this is floating numbers, this is string, here ये list है, ये set है, ये tuple है, ये dictionary है. So total many things we covered. And one more thing, like h is equal to, I'm just writing false, true. Okay, now these, ये पूरों का type क्या है मुझे find out करना है. So first I will find out the type of one, type type of A. अगर A का टाइप कर रहा हूँ ना, सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस A, व्हाट इज दिस 1, 2, 3, इसका क्या है टाइप, Type. मतलब दिस इज नंबर्स, नंबर्स है ना, इंटीजर है। हाँ हाँ हियर आई रिटर्न इंटीजर है बोल के, ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिखो, ये क्या है, इंट में आता है। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट वी गॉट, class int. yeah, so it belongs to the category of integer, this one. Now let's see what is this category, विवेक B का category क्या आएगा. So for that what I'm doing is I'm taking comma, type, पूरा पूरा लिख दे रहा हूँ B, okay, and then comma, type C, इसके बाद comma, ये जो type function है ना, it will take only one argument. So that is also you need to understand which category. So it talks about, it take one argument, वन आर्ग्यूमेंट मतलब इसके अंदर एक ही वैल्यू रख सकते हैं, एक ही वेरिएबल. तो हियर type D, comma, type, what is the type, C. E, then again comma, type F, then again comma, type, yes, G, comma, type, type के बाद, H. yes. Now let me make this bit small. पूरा हो गया ना, yes. Yes. हाँ, now let's try to execute this. What I got, first one किसका है, int, second one what, String. Third string, one float. third float ही है ना, हाँ. float है, D, List. list, उसके बाद set, उसके बाद ऐसा. बट व्हाट आई नीड इज, आई वांटेड एवरीथिंग नॉट इन सेम लाइन और टू लाइन, आई वांटेड एवरीथिंग इन different lines, means new lines. Yesterday we learned about sep, right? Yeah. Sep is equal to, इसके अंदर बैकस्लैश n दे देना है, ओके. See now it's clear. Yeah. या बैकस्लैश n. तो अभी क्या हो जाता, लेट्स see here. So everything we got. अभी देखो, you can match this. So a क्या है, Int. इंटीजर है, b क्या है, String. c, Float. d, List. e, Set.
F, full top G. What is G? dick deck Dictionary, that is. And H is H boo is boo. bool or boolean. Yeah, Yeah. So with this we can with the help of type. Type is important. We are using what type. So it takes only one argument and and shows the category of the data. So this is an example. Yes. yeah. Yeah. So in today's class, what we have learned? What are the things Data type, operation, here? We have learned mainly what it is, tokens. Yes. identify. Now I guess now I guess now you are able to understand these things, right? Yeah, Yeah. What are these, like greater than, less than symbol, and here it is not equal to, and this is for tuples we are using. This is for set. This is for list. Yes. huh. So this is int. Yeah. So all this, to understand this, we are learning what tokens. Now Yeah. in these tokens, we I have how many types? six Six. types: Identifiers, keywords, keywords, literals, literal operators, punctuation, punctuators, data type. data types. Yeah. So we have all this. So we have learned about identifiers. How many rules also we've seen, right? Yeah, How we can assign, what are the rules and regulations to like keep a identifier or a variable, and the keywords, literals, operators. In operators we have seen how many types? two types: operand No, and operator. operators पूरा 7 types है ना, arithmetic, Huh. Arithmetic, और relational, logical, bitwise. कितने हैं? 36 है. Huh. या इसके अपन रूल्स देखे थे. Rules and the literals, we said what is the literals? It is fixed value, fixed. Punctuators क्या थे? Punctuator, Special special operand, symbols. and Category of the data. Okay. Type of the data बता रहा है ये. huh. Type, category of the data. So Sangamitra, that's it for today. Okay. Yes, now it's all about your practice. The more you practice, the more you get. So these things, without missing, I wanted you to practice this part. What we have done here. This is, yeah, this part. ये पूरा प्रिंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? If Huh. you have time. Okay. 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 So that's it for the class today. Yes. Anything else? You have any doubts? No, भाई कोई डाउट नहीं है.